Dear students, today we will be starting exercise number 5.5 from the topic differentiation. Student, in this exercise we will do something special. It is a very important exercise from examination point of view, because here you will be having the multiple function more than 3, fx, gx, hx. So you have to find the derivative of these types of functions. Second, you will be having the function of x raised to the power a function of x. So these two types we will be discussing here in this exercise, because students, till now we had differentiated x power a. We know the derivative of a power x. We know the derivative of a power a, but the derivative of x power x is not known still. So after knowing all these, now it's time to get the derivative of this function also, x power x, fx to the power gx. And for these two types we will be using log to simplify the functions, to differentiate the function. We will use the log and we'll use some rules. Log mn, you know what is log mn? It is log m plus log n. We will use log m upon n, that is log m minus log n, and also we will use this form, so it will be n log m. The base is wherever the base in differentiation, the differential calculus, we are using the base is always e, whether it is mentioned or not mentioned, it is always e. Okay, so these rules we will be using for log. And apart from that, there are so many misconceptions regarding log, that if you are saying log y, if you are having a function m plus n like this and you are taking log y, then you are writing log m plus log n. बच्चों, ये बिल्कुल गलत है, ये कभी भी ऐसा नहीं करना है. लॉग कभी भी प्लस के ऊपर नहीं लगता, लॉग कभी भी प्लस पे नहीं लगता, लॉग मल्टीप्लाई और डिवाइड पर लगता है. ये दो चीजों पर लॉग लगाया जाता है. कोई फंक्शन मल्टीपल फंक्शन होगा या कोशेंट के फॉर्म में होगा तो ही लॉग लगेगा. अगर वो प्लस या माइनस के फॉर्म में है तो लॉग कभी नहीं लगेगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये देखिएगा, ये कभी एप्लीकेबल मत करिएगा. ये करते से ही, क्योंकि पहले स्टेप में ही आप गलती कर देंगे तो आगे तो ये पूरा का पूरा रॉन्ग हो जाएगा. इसीलिए इस बात का आप ध्यान रखिए. सो कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इन माइंड, वी विल बी स्टार्टिंग द एक्सरसाइज. एंड व्हाट वी आर हैविंग द फंक्शन cos x, cos 2x, cos 3x. Now how we will be differentiating this function? So students, as they are the multiples, the function is written in the multiples, but the multiples are more than 2, क्योंकि 2 से अधिक के लिए हमारे पास में प्रोडक्ट रूल है, 2 के लिए प्रोडक्ट रूल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम 3 पर प्रोडक्ट रूल नहीं लगा सकते. Even we can apply for 3 and n number of multiple functions. Multiple functions, n number of multiple functions भी होंगे तो भी प्रोडक्ट रूल लगाया जा सकता है, लेकिन वो बहुत ही पैनिक हो जाएगा, वो बहुत ही लेंथी हो जाएगा. इसीलिए हमें लॉग का इस्तेमाल करना चाहिए. तो हम ले रहे हैं दोनों तरफ लॉग. लॉग y इज इक्वल्स टू लॉग cos x, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है इसीलिए हम प्लस का निशान लगाएंगे इस तरह से. अब डिफरेंशिएट करेंगे log y, जैसा कि आप जानते हो, the derivative of log y is 1 upon y, and also we have to write y dash because it is a function of y and we are differentiating with respect to x. log cos x का डेरिवेटिव होता है 1 upon cos x, और फिर cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस sin x. उसी प्रकार से ये 1 upon cos 2x, cos 2x का डेरिवेटिव -2 sin 2x.
And similarly, here also log of cos 3x will be 1 upon cos 3x minus 3 sin 3x. So these are the derivatives, that is minus 10x minus 2 tan 2x minus 3 tan 3x. This is y dash upon y, but we are in need to calculate the value of y dash. So it will be y. What is y? Y is cos x, cos 2x, cos 3x and tan x, 2 tan 2x and 3 tan 3x. So this will be the derivative, and the sign which is minus, all the terms are negative, we have taken minus sign common and we are writing it like this. So in this way we differentiate a function which is in a multiple form and having more than two multiples, like cos x, cos 2x and cos 3x. log अप्लाई करेंगे, ध्यान रखिएगा मल्टीप्लाई पे log प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y, लेकिन y का फंक्शन है इसीलिए y डैश भी आएगा साथ में, log cos x का 1 अपॉन cos x, लेकिन cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, उसी प्रकार से log cos 2x और cos 2x का डेरिवेटिव माइनस 2 sin 2x, ऐसा करके हम इसको कंप्लीट करेंगे। बस ध्यान ये रखिएगा कि लॉग का जो रूल लगे वो बहुत एहतियात बरतते हुए लगे, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जरा सी भी मिस्टेक हो जाएगी और ये सवाल पूरा गलत हो जाएगा, लेंथी क्वेश्चंस होंगे। देखिए एक और सवाल कर रहे हैं हम, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x minus 5, like this. We have a function under root x minus 1, x minus 2 upon x minus 3, x minus 4, x minus 5. Now see, log y. Okay, so this is whole power half. What is square root? Square root means whole power half. Okay, so when you take log of power will come as a multiple, because we have a rule. So it will be half log x minus 1 log x minus 2 minus log x minus 3 log x minus 4 log x minus 5. Students, I have told you that there is a law, n to the power n is n log m. सबसे पहला नियम ये लगाया अपन ने यहाँ पर हाफ जो था वो पावर में था, जैसे ही आप लॉग लेंगे वैसे ही वो जो पावर है वो सबसे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी। फिर ये फॉर्म आ गया log m अपॉन log n का, तो log m अपॉन log n क्या होता है, log m माइनस log n। तो माइनस में ये सारे माइनस में आएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो ये log प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन क्वोशिएंट पार्ट है, डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये सारे नेगेटिव हो जाएंगे। और अब हम इसको फिर लिखते हैं y डैश अपॉन y 1 अपॉन 2 1 अपॉन x माइनस 1 1 अपॉन x माइनस 2 1 अपॉन x माइनस 3 डेरिवेटिव ऑफ log 1 upon x minus 4 derivative of log x minus 4 and derivative of log x minus 5. Now we have to write y dash. Y will come here. So how we will write the value of y? X minus 1, x minus 2, x minus 3, x minus 4, x minus 5, all the component. Then 1 upon x minus 1, 1 upon x minus 2, 1 upon x minus 3, 1 upon x minus 4, and finally 1 upon x minus 5. So this will be the value of the derivative of the function. So in this way, when we apply log, be careful while applying the log. Okay. So after this, let's move on to the next type, that is
the type where we have to use log for the form function of fx to the power function of fx. As I had discussed before starting the exercise that we have only two types of problems here. The first type will be the multiple functions more than 2, and the second type will be the power raised to the power, the function of x raised to the power function of x. So here we have y is equals to log x to the power cos x. Now this is a function of x as the base and the function of x as a power also. Both are function of x in the power, in the base, both places. So again we'll take log y will be, this power will come to this side, cos x, and log x. Okay, then again this will become y dash upon y. Now I will use product rule because we have two functions, cos x and log x. So cos x, the derivative of log x will be 1 upon log x, and the derivative of log x is 1 upon x, plus now derivative of cos x is minus sin x and log x. So finally the value of y dash will be log x to the power cos x into cos x upon x log x minus sin x log x. So in this way you will be getting the answer. सबसे पहले लॉग लगाया, देखिए ध्यान से, तो ये जो पावर थी आगे आ जाएगी, ये रूल है, अभी मैंने लिख के दिखाया था आपको रूल, log ऑफ m की पावर n, log ऑफ m टू द पावर n, ये हो जाता है n log m. ये हमेशा ध्यान रखिएगा, हर जगह यूज करेंगे इस फॉर्म को हम. ये आगे आ गया. अब उसके बाद में प्रोडक्ट रूल लगाएंगे. दो फंक्शन है, cos x है, एक log x है. तो cos x को ऐसे ही रखा, log x का डेरिवेटिव, log x means log x, तो log x का डेरिवेटिव 1 upon x, then it is not x, this is log x, so derivative 1 upon x again. Now keeping log x as it is, derivative of cos x, that is minus sin x, and then shifting this y to this side, the value of that y is log x to the power cos x, so the derivative will become this. Now let's move on to the next question. Now again we are going to learn something new, because this exercise is very important. So many things you have to learn and practice, because practice will only make this exercise perfect for you. So practice is most important. Now it is x to the power x minus 2 to the power sin x. So the function is x to the power x minus 2 to the power sin x. Now how we will simplifying it? See, I am taking u as x to the power x and v as 2 to the power sin x, like this, separately. Okay, don't take log. I told you that log cannot be applicable on plus and minus. So this is a subtraction. The function is given in the difference form, so you can't apply log over it. Now log u will be x log x, so it is u dash upon u is equals to x, the derivative of log x 1 upon x, then log x, derivative of x is 1, so it is 1 plus log x, and when this u shifted to this side, the value is x to the power x, so the derivative of u dash will be like this. Now v dash directly, because we have the derivative of a power x. What is the derivative of a power x? It is a power x log a, and sin x, the derivative of sin x is cos x. So we will write cos x 2 to the power sin x log 2, like this. So y is u minus v. देखिए ध्यान से, y क्या है, इसको अपन ने क्या माना, इसको माना u, और इसे क्या माना v. तो y will be u minus v, y dash will be u dash minus v dash. So what is u dash? X to the power x into 1 plus log x minus, पहले ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको,
to the power sin x cos x log 2. So in this way, the derivative of y dash you will be getting. Very important question. So be attentive while solving it. Now let's move on to the next. You have to do practice for this particular exercise. Now the next function is x plus 3 whole square, x plus 4 whole square, x plus 5 whole square. Students, the same type of question which we had discussed as question number 1, the same question again we are having as question number 5. X to the power 3, x plus 3 whole square, x plus 4 whole square and x plus 5 whole square. Now when you take log 2 log x plus 3, 2 log x plus 4, 2 log x plus 5. Now the derivative, directly you can write y dash upon y. It will be 2 upon x plus 3, 2 upon x plus 4, 2 upon x plus 5, and finally the value of y dash is x plus 3, x plus 4, x plus 5, and you can take 2 also common if you want to take 2. So it will be 1 upon x plus 3, 1 upon x plus 4, 1 upon x plus 5. So in this way you will be getting the answer. Very carefully simplifying each and everything. Oh sorry, the powers are different. Sorry, 2, 3 and 4. The power are 2, 3 and 4, no doubt, no problem. We will make it like that. It is 2, this is 3 and this is 4. So it will be what? 3 and this will become 4. Okay, so this is 3 and this will become 4. So we can't take 2 common. So it will be 2, 3 and 4 like this. Here also 2, 3, 4. So the derivative of y dash will be, x plus 3 whole square, x plus 4 whole cube, x plus 5 whole power 5, x plus 5 whole power 4, then 2 upon x plus 3, 3 upon x plus 4 and 4 upon x plus 5 like this. So similar form. Now comes a little bit typical function. So what the function is? The function is x plus 1 upon x whole power x plus x to the power 1 plus 1 upon x. X to the power 1 plus 1 upon x. Now again we will take this as u, x plus 1 upon x to the power x, and this v like this. So log u is equals to x log x plus 1 upon x. Now derivative u dash upon u. Now product rule we will be applying. So x log का derivative 1 upon x, okay, और इसका derivative 1 minus 1 upon x square. क्यों? क्योंकि ये क्या है? x है, x का derivative 1 होता है और 1 upon x का derivative क्या होगा? minus 1 upon x square हो जाएगा. तो x को ऐसे ही रख के जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे log x plus 1 upon x का तो ये आएगा, और जब हम x को रख करके log को रख करके x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 हो जाता है. तो इसको अगर अपन देखें तो कितना हो रहा है? ये x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर. It will be like this, plus log x square plus 1 upon x. So this is u dash upon u. So what is u dash will be equal to?
u dash will be equal to x plus 1 upon x to the power x into x square minus 1 upon x square plus 1, because these two x square get cancelled, plus log x square plus 1 upon x. So this will be the derivative of this function you will be getting after solving it. Then after that we are having the another function. तो ये जो फंक्शन है हमारा, इसमें भी हम log ले लेंगे. log v will be equal to 1 plus 1 upon x into log x. So it will be v dash upon v minus 1 upon x square log x. दो फंक्शन है क्योंकि ये भी एक x plus 1 upon x है और दूसरा log x है, तो log x को ऐसे ही रखा. x plus 1 upon x का डेरिवेटिव प्लस इसको ऐसे ही रखा और log x का डेरिवेटिव इस तरह से हमारे पास में ये आ जाएगा log x upon x square with minus sign plus x plus 1 upon x square, this is v dash upon v. So the value of v dash will be, v क्या है, x to the power 1 plus 1 upon x, x square, x plus 1 minus log x. ये आपका v dash आ गया. तो जो कि हमारा y था वो क्या था, u plus v. तो y dash क्या हो जाएगा, u dash plus v dash. तो u dash क्या है, x plus 1 upon x whole power x into x square minus 1 upon x square plus 1 plus log x square plus 1 upon x plus x to the power 1 plus 1 upon x into x plus 1 minus log x upon x square. अगर आप ये डिनोमिनेटर का x स्क्वायर नहीं लिखना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप क्या कर सकते हैं, आप इस x स्क्वायर को x की पावर जो ब्रैकेट के आगे लिखी हुई है उस पावर के पास ले जाएंगे तो ये पावर -2 हो जाएगी. जब ये पावर -2 हो जाएगी तो आपको मिलेगा 1 upon x minus 1, 1 upon x minus 1 मिल जाएगा. ये जो पावर 2 मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये जब यहां चली जाएगी x, क्योंकि x की पावर ये भी है और x की पावर ये है, तो ये हो जाएगा -2, तो 1 upon x minus 1. तो इस प्रकार से भी आप आंसर को लिख सकते हैं. अदरवाइज जो लिखा हुआ है वो ठीक है, इस तरह से आंसर लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. ध्यान से देखते जाइए, समझते जाइए, एक एक सवाल आपको कर करके देखना है, हर एक सवाल. इसीलिए मैं कोई सवाल नहीं छोड़ रहा हूं, आपको सारे सवाल करवा रहा हूं ताकि आप हर सवाल को समझिए, क्योंकि हर सवाल को आप जब समझेंगे तभी एक एक चीज पकड़ में आएगी, कंसेप्ट समझ में आएगा और जो वर्किंग प्रोसीजर है वो मालूम चलेगा. जैसे ही आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे फिर आपको कोई जरूरत नहीं है अलग से और प्रैक्टिस करने की, क्योंकि once the concepts are clear then the number of questions doesn't matter. You can solve as many questions as you can like. जितने सवाल चाहें उतने सवाल आप कर सकते हैं अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाता है किसी भी चीज का. तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द सेवंथ क्वेश्चन. log x to the power x, x to the power log x, log s to the power x and x to the power log x. Now again we will take let u is equals to log x to the power x and v is equals to x to the power log x. Okay, so y will become u plus v, वो बाद में कर लेंगे. log u किया, x log x log x हो जाएगा. ये क्यों, क्योंकि x तो आगे आ गया, अब इसका log होगा तो log x हो जाएगा. तो ये क्या होगा, डेरिवेटिव u डैश अपॉन u, x का डेरिवेटिव 1 log x प्लस x, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन log x इंटू 1 अपॉन x. तो u डैश इज इक्वल्स टू क्या हो गया, log x की पावर x log x log x प्लस 1 अपॉन log x, क्योंकि ये जो x हैं ये दोनों कट जाएंगे और इस तरह से हमारे पास में u डैश की वैल्यू आ जाएगी. फिर log v ले लेंगे अपन, log v इज इक्वल्स टू, व्हाट इज log v, log v log x
log x, it means it will become log x to the power 2. So b dash upon b, the derivative of log b, then it will become 2 log x. पावर रूल लगेगा पहले, log x होल स्क्वायर है, पहले पावर रूल लगेगा, पावर रूल से 2 log x मिलेगा और फिर log x का डेरिवेटिव 1 upon x. इस तरह से b dash की वैल्यू हो गई x to the power log x into 2 log x upon x. So y dash जो कि u dash plus v dash बन जाता है, u dash की वैल्यू है log x की पावर x into log x plus 1 upon log x plus x to the power log x into 2 log x upon x. तो ये जो है ये y dash की वैल्यू हो जाती है आपकी. तो y dash की वैल्यू एक बार और चेक कर लीजिए, log x to the power x 1 upon log x plus log x plus 2 log x upon x into x to the power log x. So this is the value of y dash. So students, these questions are very important question and I hope you will be understanding, you are getting it. Now one more question I will discuss with you, then we have to stop the video because it will be more than 30 minutes and I think that at least one video should be of 30 minutes so that you at least get the concept clearly. And after viewing this video, you must practice these questions. They are very important questions and from examination point of view also, this exercise is very important. Already so many questions from this exercise has been asked in the examination. Sin x to the power x, sin x to the power x plus sin x to the power x plus sin inverse root x. Now u sin x to the power x log u x log sin x. So u dash upon u, the derivative of x is 1, log sin x will be as it is. Then x log sin x is 1 upon x and derivative of sin x is cos x. So it will be x tan x, x cot x plus log sin x. And this, when you talk about u dash, you will be writing sin x to the power x. Now when we talk the derivative, when we talk about the derivative of this, then directly we will have sin inverse x का होता है 1 upon under root 1 minus x square, क्योंकि root x है इसीलिए root x में चलो मैं लिख देता हूँ root x का स्क्वायर, root x का 1 upon 2 root x और इस तरह से ये हो जाएगा 1 upon 2 root x minus x square. तो y dash जो कि होगा u dash plus v dash. So u dash is sin x to the power x, x cot x plus log sin x plus 1 upon 2 under root x minus x square. This will be the derivative of this 8th question. And students, this will be the last question for us. And after this, we will be having the next question in the next video. Let us match the answer from at the back. Sin x to the power x, it is x cos x plus log sin x is equals to 1 upon 2 root x. Okay, so these are first 8 questions from the exercise. Next question will be in the next video. Thank you, students.